तो हम लोग इस सूत्र को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने किस तरह से त्याग आधारित प्रसन्नता पे के आश्रित होकर गृहस्थ प्रसन्नता का अतिक्रमण किया जा सकता है, और त्याग आधारित अप्रसन्नता के कारण गृहस्थ अप्रसन्नता कैसे गौण हो जाती है, और त्याग आधारित संभाव के आधार पर गृहस्थ संभाव खोखला लगने लगता है, उसका महत्वहीन हो जाता है। कल हमने समझने का प्रयास किया, कुछ चर्चा भी की, क्योंकि संभाव को लेके अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ज्यादा डिटेल नहीं कहना चाहूंगा, कि जो मुख्य बात यही है कि एक नेचुरल प्रोसेस है संभाव की, एक कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस है। हम अपने एफर्ट के कारण संभाव का प्रयास कर रहे हैं, और जब एफर्ट के कारण करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार नहीं कर पाता। दैट्स द करेक्ट। और जो त्याग आधारित संभाव है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कि वो ऐसा संभाव रूप के प्रति आसक्ति को पार कर पाता है। रूप में नहीं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर आयतन्स। क्योंकि वो संभाव की जो आधार है वो प्रज्ञा है, कि मुझे उसका अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध इतना पुष्ट हो गया कि अब वो मेरे को लालायित नहीं करता, वो रूप या शब्द या गंध। तो उसके प्रति आसक्ति काफी समाप्त हो गई है, पूरी तरह का समाप्त हो गई है, काफी हद तक समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार से इनका दो बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है, जिससे कि हम, एक तो डिस्टिंक्शन ये है कि वो कंस्ट्रक्टेड है, जोर जबरदस्ती से की जा रही है संभाव, और ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस है बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्री लक्षणास। क्योंकि हम काफी इस पे चर्चा कर चुके हैं, मुझे लगता है अभी अच्छा रहेगा कि हम आगे बढ़ें, और फिर उसमें वापस आ जाने की आवश्यकता होगी तो फिर वापस आ जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस टुडे कि त्याग आधार, ये तीनों ड्रॉप हो गई, गृहस्थ प्रसन्नताएं, अप्रसन्नताएं, गृहस्थ संभाव। नाउ वी आर लेफ्ट विद द स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस एंड इक्वानिमिटी। अब इनके सब्स्टिट्यूशन जो भगवान हमको सुझाव दे रहे हैं कि त्याग आधारित प्रसन्नता पर आश्रित होकर त्याग आधारित अप्रसन्नता का परित्याग, अतिक्रमण करो। So this we have to reflect and understand. And then secondly, त्याग आधारित संभाव पर आश्रित होकर त्याग आधारित प्रसन्नता का परित्याग करो। तो इस तरह से अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद त्याग आधारित संभाव, और उसका जो अतिक्रमण है वो बाद में देख लेंगे। लेट अस डिस्कस दीज टू टुडे। तो जो मैं अपने अनुभव से आपके सम्मुख पेश प्रस्तुत कर सकता हूँ कि दिस अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस। इफ you see the whole span of our practice, when I recall my own practice and see the states of general states with which I associated my practice, शुरू में तो obviously अभी understanding ही हो रही थी, but after a few years some element of understanding developed. तो and a feeling of lightness was definitely there, और कुछ हद तक चीजें जो जिनके प्रति आसक्ति थी वो, हालांकि वो कम ही थी, लेकिन वो आसक्ति कम हो गई। तो एक तरह का भार की कमी थोड़ी बहुत महसूस होने लगी। तो त्याग आधारित प्रसन्नता का थोड़ा अनुभव हुआ, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव हुआ त्याग आधारित अप्रसन्नता का, क्योंकि कई वर्षों, मतलब लगभग 20 वर्ष बाद भी यही प्रश्न उठता था कि
ये अनात्म बोध की बात तो समझ में आ ही नहीं रही है, तो काम कैसे चलेगा। और जब हमें कहा जाता था हमारे टीचर की भाई अब करते रहो, अनित्य दुख बोध पुष्ट होगा तो अनात्म बोध अपने आप डेवलप हो जाएगा, मैं कहता था हूँ तो नहीं रहा। सो देयर वाज अ काइंड ऑफ ए फिक्सेशन, और साधना में भी लग रहा था कि एक तरह का प्लेटू आ गया है। ऑफ कोर्स आई बेनिफिटेड अ लॉट in terms of uh, reduction in cravings, reduction in aversion, but जो एक भाव था आत्म भाव वो कम नहीं हुआ था, तो उसकी कम ना होने के कारण डेफिनेटली अप्रसन्नता जाग रही थी। एंड द फीलिंग वाज कि इसके बगैर तो वी आर नेवर गोइंग टू गेट लिबरेटेड, वी आर नेवर गोइंग टू गेट, जब अगर हमें सकाय दिठी नहीं टूट रही है, समझ ही नहीं आ रही है ठीक से, तो कैसे काम चलेगा। एंड दैट वाज क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, मेनी इयर्स दिस कंटिन्यूड टिल वी रियलाइज कि हाँ भाई वी केम इन कॉन्टेक्ट विद टीचिंग्स ऑफ वेदांत चार उस समय दोस बुक, एंड रियलाइज की प्रॉब्लम कहाँ है कि हम अपनी डिफाइलमेंट्स को पर्सनली ले रहे हैं। एंड दैट वाज क्वाइट remarkable insight. And then when worked on it further, तो त्याग आधारित अप्रसन्नता अपने आप कम हो गई, और एक तरह से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा अनात्म की बात भी समझ में आ रही है, अनित्य बोध दुख बोध अनात्म बोध ठीक से समझ में आ रहे हैं। एंड continued practice, continued reflection will help in getting through it. तो जो त्याग आधारित अप्रसन्नता थी वो अपने आप छूट गई, कम हो गई, और त्याग आधारित प्रसन्नता थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी। बट मोर देन दैट एज द प्रोसेस डेवलप्ड एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड के बाद समझ में आ गई कि हाँ ये समय के हिसाब से ही होगा, ग्रेजुएटेड पाथ है, कई कंडीशनैलिटीज हैं, जो कोई कंडीशनैलिटीज की बात समझ में आने लगी, परसेप्शन की बात समझ में आने लगी कि कई कंडीशनैलिटीज हैं जो फुलफिल नहीं हो पा रही, जो बियॉन्ड माई कंट्रोल। सो लेट मी नॉट create a unnecessary craving for liberation. Of course, there is that direction has been set properly, so then it will happen. So जो भगवान की टीचिंग में आता है ना कालम आगमे, wait for the time to come, and that slowly started sinking in. So उस कारण से कुछ हद तक, काफी हद तक एक त्याग आधारित संभाव डेवलप हुआ। तो अभी अगर मैं माइंड की स्टेट को देखता हूँ तो प्रसन्नता काफी कम है, in the sense of sort lot of exhilaration and joy of the, or preeti of that kind, but there is some sense of equanimity. Yes, we are on the right path, and slowly there's we'll reach the destination. You know, that sort of confidence arises. So that's the way I have seen this transition happen. And I would request कि आप सब लोग भी अपने अपने अनुभव के आधार पर देखें क्या ये does it make sense what I have said, and what is your own experiences in this direction. So we'll discuss it in individual groups and then come back to the session and share each other's findings, which whatever it may be. Okay, is that clear? दरअसल कंसेप्चुअली अभी तक हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्पिरिचुअल रिलीफ, स्पिरिचुअल अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस एंड देन स्पिरिचुअल उपेक्षा, है ना, ये एक ग्रोइंग स्पेक्ट्रम ऑफ इंसाइट है. Yeah. Which means that spiritual unsatisfactoriness is at a higher level of insight relative to spiritual relief. In the beginning part, yes. Whereas here now we are saying that relief Yeah. trumps unsatisfactoriness. Because it is not a static level of insight. It's a dynamic level of insight. Now, as the insight develops, we go from unhappiness to happiness to equanimity. They, in the process of going that, they
maturity of insight helps us to become more drop off many other things also simultaneously. कई चीजें जिनके प्रति पहले आसक्ति थी वो छूट जाती है उसी प्रोसेस में. So it is the process of developing insight which results in this transformation. As I try to relate from my own experience, कि जैसे जैसे insight develop होती जाती है, in fact, the transition, at least in my case, was pretty quick, pretty straightforward from unhappiness to equanimity, and the spiritual happiness, or that was very mild of that kind, and the unhappiness also dropped off. Why did it drop off? Because of the increasing insight that yes, the paths to whatever shortcomings were there in the inside, they were understood and they were developed. So as they got developed, the unhappiness fell off, and it became clear that the path is going to lead in the correct direction. Initially, there was a doubt that because the insights of anatta was not really getting developed at all. As it was getting developed, then this doubt also reduced, and जो unhappiness का इतना लंबा period रहा, that slowly faded away, and it led to the confidence. I wouldn't say happiness, it led to confidence, which you can call as pleasant mental feeling. Once you see the pleasant mental feeling, that it makes sense. And then with a greater understanding, it led to equanimity, that that things are going to take place at their own rate, depending on my karma, on my paramis, on the conditionalities which I encounter. So there is no need to create a unhappiness on this account any longer, because the purpose of unhappiness was to push the progress push the dhamma samveg towards more intensive work, and that had been achieved. Once the spiritual unhappiness has achieved its purpose, it loses its sting. That, at least that has been my experience. Yeah, correct. Exactly. And so that goes into upekha. Yeah. That's fine. That progression, as you have described it for your own life, is fine. Yahan sutta mein, the progression isn't exactly like that, you see. It is in some sense. See, what is it saying? Okay, on the basis of spiritual happiness, you give up spiritual unhappiness. When will it happy? When the increasing insight is resulting in greater pleasant feelings. Then the unpleasant feelings are lesser because insight is increasing. That's the way I look at it, that the pleasant, because simultaneously with the development of insight, the pleasant feelings also increase because you are dropping off so many things. पहले एक आध चीज ड्रॉप हो गई, अब बहुत सारी चीजें ड्रॉप हो गई, आपका बर्डन कम हो गया, you're not seeking things around, you're not moving around, you have much more time available for whatever you want to do. So all that helps in improving the pleasant mental feelings. So जिसको हमने रिलीफ कहा था, जी, वो रिलीफ पहले गया टुवर्ड्स लेट्स से अनसैटिस्फैक्टरीनेस या बेचैनी, है ना, जिसको हम ब्रॉडली दो मन से कह रहे हैं. और फिर एक तरीके से वो घूम के वापस आ गया टुवर्ड्स एक्चुअल प्लेजेंटनेस व्हिच इज ग्रेटर देन जस्ट रिलीफ. नाउ दैट्स व्हाट आई हियर यू सेइंग नाउ. Yeah, see, let me repeat. I mean, words have their limitations. Let me repeat. I mean, I'm best remembering my states of mind, and I'll share whatever extent I can. See, there was quite a long time, many years of that unpleasantness. Okay, and it was not that it always unpleasantness. There was a kind of background state of unpleasantness, but there is a reasonable level of equanimity maintained in the practice, in the life also. But once that sting of unpleasantness got reduced because of the understanding of anatta properly, and you can say therefore developing insight became stronger. सामान्य शब्दों में कहें तो insight stronger हो गई.
जब insight stronger हो गई तो the confidence increased. I remember when this happened, I felt quite happy at that time कि अरे समझ में आ गई यार, अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा. But my temperament being what it is, it only gives rise to pleasant feeling. It doesn't give any joy or any such thing. So it was a pleasant feeling. हाँ चलो अच्छी बात है. एक बड़ा भारी अवरोध था वो रुक गया, हट गया. So there was a pleasant feeling definitely on that. And the unpleasant feeling which existed, it lost its sting because the sting was there of incompleteness of insight. And the doubt whether I'll be really able to go in that direction of freedom from suffering, complete freedom from suffering. So when this happens, then actually you can, manner of speaking, one can say that pleasant mental feeling has now with increased insight overwhelmed the unpleasant mental feeling, because the unpleasant mental feeling has lost its sting with more clarity on Dhamma, with more insight. So that's how I can try to put it in that manner. Obviously, everybody will have his own journey to see, and depending on the temperament, sometimes somebody misses out on that. जो कंफ्यूजन है ना वो ये है, जो पंजो जी कह रहे हो, मैं भी उससे रिलेट कर रहा हूँ जी. जो पहले स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने अनप्लेजेंटनेस को प्लेजेंट, त्याग आधारित अनप्लेजेंटनेस है उसको हायर पेडिस्टल पे रखा है देन दे त्याग आधारित प्लेजेंटनेस से. अब जो आप बात कह रहे हैं कि वो वहां पे वो ठीक है, नहीं वो आप कह रहे हैं कि वहां वो ठीक है क्योंकि वो सीकिंग चाहिए, यानी त्याग आधारित अनप्लेजेंटनेस बिगिनिंग में चाहिए जिससे कि हम उस पर और काम करें, और वो काम करते करते फिर वो हम वापस त्याग आधारित प्रसन्नता पे आएंगे. लेकिन वो ठीक नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली संभाव पे पहुंचना है. उसकी क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगी. अब जो कंडीशन क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होगी, पहले से बहुत स्ट्रांग होगी, तो फिर अनप्लेजेंटनेस अपने आप खत्म हो जाएगी. We have to see this as a developing insight, continuously developing insight into the three lakshanas. We have to see it in that manner. तब वो clear होगा, नहीं तो obviously this kind of doubt will happen. Yeah, but ultimate aim is to reach त्याग आधारित संभाव. Not even that, yeah. At this moment, yeah. At this moment, yes. Yeah. I mean, beyond that तो बात की, मतलब अभी जो प्रैक्टिशनर हैं हम लोग, तो हम पहले तो प्रसन्नता से अप्रसन्नता की तरफ बढ़े, त्याग आधारित प्रसन्नता को बरकरार रखें जिससे कि और मेहनत करें. हमको the way we are understanding it is that we have to do it. It's not really that we have to do it actually. I didn't want to be unhappy. I can assure you that nobody will want to be unhappy. Yeah, that's right. Unhappy in a sense that it arises when you reflect, यार क्या हो गया, 20 साल हो गए, कहाँ फंसे में. Right. कोई हमको समझा ही नहीं रहा, अनात्म बोध कैसे जागेगा, ये क्या हो रहा है. कह रहे हैं करते जाओ कर लिया आपने, जो जो कहा सब, जितनी स्टेज बताई 60 दिन से शिविर तक सब हो गई, लेकिन अनात्म बोध तो नहीं कुछ हुआ. तो कब तक करेंगे? That was a big question, and it created turmoil, it created doubt, so many problems arose. So, but it didn't really kind of throw me out of the practice. Why? Because there was experience of happiness was there. वो भी तो था ही ना कि यार इससे फायदा भी हुआ है, वो थोड़ा भूल गए. So we said हमारी अंडरस्टैंडिंग में कहीं कुछ कमी है, या हमारे को समझाने वाले में कुछ कमी है, समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहिए, कुछ ढूंढना चाहिए. So it gave rise to search, and the search became evident in the form of other teachings which were available. Studying the sutta, studying Ajancha, pursuing those books, and so on. So that unpleasantness played a very crucial role. So from your experience, we should learn that we have to, फिलहाल तो हम फिर अनप्लेजेंटनेस जो है पहले तो उसको ही जान लें कि ये अनप्लेजेंटनेस जो है ये वाकई सही है, मुझे इसका इतना आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो unless until we are at that level, तब उसके बाद हम फिर वापस सोचेंगे कि हाँ अब हम प्लेजेंटनेस पूरी तरह से हमारे में आ गई है. Yeah, that's true. Different stages of our practice
we'll experience that. It's like a map. कोई कैसा माइलस्टोन होता है when one feels कि अब उसने अनप्लेजेंटनेस को खत्म कर दिया और वापस वो प्लेजेंटनेस होगी, मालूम होगी, बताते रहो आप, वो तो आपको महसूस होगा, तो मैं क्या बताऊं माइलस्टोन उसका. It is such a kind of shaking up of the practice. 20 साल से मैं साधना करे जा रहा हूँ इतनी गहराई से, गंभीरता से, और अभी भी मैं वहीं अटका हुआ हूँ. That thought arises naturally when you investigate. So that's a kind of natural phenomena. It's not that we have to create it. It's a natural phenomena which will happen. Na? These are all progressions which happen. From the first drop of grahastha prasannata, then the grahastha prasannata becomes insignificant. Then the grahastha sambhav, jo artificial sambhav, wo insignificant ho jata hai. Then you see further, and then if the unpleasantness leads to proper search, if that unpleasantness leads to proper search and a solution is found, some kind of a solution is found, something which is missing in my practice, if I'm able to find, or I'm able to get a teacher who tells me, do this, is tarah se tumhara kalyan hoga, your insight will develop further, then obviously the unpleasantness will drop off, because it has resulted in search and it has fulfilled its purpose. And then the pleasantness also increases because of this factor, that unpleasantness has dropped off, pleasantness increases. So they are actually substituting each other. And then you further progress further, and a state comes and you understand conditionality of the whole process. For me, for example, study of Vedanā was very helpful in understanding a conditionality and getting out of all this calculation ki kab hoga, kaise hoga, kahan hoga. You could understand there are so many conditions required for fulfillment and for progress along the path of Dhamma. And it is, as the Lama Surya Das says, ownerless karma rolling on. Some such words had profound impact on me. When you see ownerless karma rolling on, then don't take it personally. Now that's a statement, but whether we are able to do that way or not depends on us. So that's the way the equanimity gets strengthened further. Right? So these जो कहा जा रहा है गृहस्थ प्रसन्नता, अप्रसन्नता, equanimity, they are not static things. They are dynamically changing with time, with practice. So as the practice strengthens, they become intensified. Some become intensified, some drop off. For example, I just wanted to ask you कि spirituality की जो ladders हैं, उसमें equanimity को अगर नापना हो, जब हम मान लीजिए कोई ऐसी घटना घट जाए जो आपको शेक कर दे, मतलब शेक इन ए सेंस, नॉर्मल सेंस में कहें कि दुख से भर दे, लेकिन आप उसको दुख को ओवरकम कर पा रहे हैं और यू आर नॉट डिस्टर्ब. Can you say that would be the stage when we can say we have reached the sambhav? उसकी बेसिस क्या है? वो तो मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ ना कि क्या किस बेसिस पे ऐसा हो रहा है ना? नहीं, हम देखिए क्या है कि हम we are not isolated from this whatever we have the environment today, and we'll keep on having it, and we had it right from beginning. तो जब इस एनवायरनमेंट में जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आघात तो होता ही है. अब वो आघात जो होता है उस पे हम कैसा रिएक्ट करें वो मुझ पे निर्भर करता है. और मैं अगर अपने आप को एक पेडेस्टल पे रखना चाहूं कि भाई मैं इक्वानिमस रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई धम्म विचलित नहीं करना चाहिए, मैं रोज रोज उसका पाठ करता हूँ, मैं सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, और निंदा में, प्रशंसा में, यश में, अपयश में मुझे कुछ नहीं होना चाहिए. तो उसी को हम उपेक्षा कहते हैं, उसी को हम मुदिता, आई मीन इक्वानिमिटी कहते हैं. अब ये मैं समझ गया, मैं आपकी बात अब समझ गया कि इज इट
auto suggestion which we are giving ourselves, or is it based on the insight of anicca dukha anatta? मैं बार बार आपकी ध्यान उसी ओर दिला रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण बात है. ऑटो सजेशन से by being wise we can come out of it. ऑटो सजेशन से नहीं होगा ही, unless until one is deeply understanding that anicca and अनित्य है. मतलब आपको तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा ना, आपको अगर लगता है तो फिर वेरी गुड, उसमें क्या बात है. मैं तो कह रहा था कि मतलब यही एक मापदंड हो सकता है कि हाँ मुझमें इक्वानिमिटी आ गई है. मैं मापदंड इसको बाहरी व्यवहार को नहीं मानता. प्लेन भीतर से होगा, बाहरी व्यवहार से तो नहीं होगा ना. नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मेरे को उसका असर नहीं पड़ा. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसका मैं मापदंड की बात कर रहा था कि how will one know that one has reached that state? मैं उसकी बात कर रहा हूँ. One will know from within that I took this situation is very clear to me, it is impersonal. That's right. Only then it will happen, otherwise it will not. नहीं, otherwise तो दिखावा हो जाएगा ना, फिर तो गृहस्थ वाली बात हो जाएगी. ऐसा है तो अच्छी बात है, इक्वानिमिटी डेवलप हो रही है, ठीक बात है. तो त्याग आधारित इक्वानिमिटी डेवलप हो रही है. अगर उसका आधार 3 लक्षणों की इंसाइट है तो वो है वेरी क्लियर. तो उसी पे काम करते हैं. ठीक. दीपक, आपको कुछ कहना है? दीपक? हाँ, मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं. आई थॉट आई विल पुट इट अक्रॉस. जैसे अभी महापन्न जी ने कहा और फिर बाद में राजेंद्र जी ने कहा, जो त्याग आधारित प्रसन्नता है जिसको हम कल तक पढ़ते आ रहे थे और आज आप एक और डायमेंशन ऐड हो गई, तो मैं समझता हूँ कि समझने के लिए हम कहें कि वो 2 लेवल की है. एक लेवल तो यह है कि हमने बोझ हमारा हट गया और हमें जो टाइम एंड एनर्जी है हम इस तरफ अपना लगाएंगे. मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा जी. वो 2 लेवल की नहीं है, इनफाइनाइट लेवल. नहीं, अभी आज का कल तक एक थी. काइंडली लिसन केयरफुली. आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट टू कट योर पॉइंट्स. आई एम सेइंग इट वेरी सिंसियरली. This is of infinite gradation, continuous gradation, continuous increase. That's it. तो इसको 2 लेवल ना मानिए, बस ये कह रहा हूँ, क्योंकि वो बाइनरी में फिर हम फंस जाएंगे. मैं बिजी हूँ यार. It has to continuously increase. अगर मेरी साधना ठीक हो रही है, अगर मेरा तिरक्षण की भाव और गहराई से पेट रहा है, मेरे अंदर भावित हो रहा है और मैं उसको अपने जीवन में देख पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा. तो उससे धीरे धीरे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो बढ़ते चले जाएंगे, नेगेटिव घटते चले जाएंगे. दिस इज नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड. जैसे कहा जाता है ना कि आप अगर नीवरण को ठीक से देखते हैं तो नीवरण ड्रॉप हो जाते हैं. आप अगर भुजंग को ठीक से देखते हैं तो भुजंग डेवलप हो जाते हैं. अब आप नहीं, वो आपने कहा इनफाइनाइट लेवल, तो आज अभी बात समझ आ गई. इनफाइनाइट लेवल्स हैं. कल तक हमें लगता कि एक ही लेवल है, हमने वो जो ड्रॉप कर दिया तो उससे जो सुख मिला. और आज जो आपने कहा कि अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उससे लगा कि एक और नेक्स्ट लेवल है जिसकी वो लेवल जो हमें इनफाइनाइट तक ले जाएगा. वो बात क्लियर है. दूसरा पॉइंट ये था कि आपने एक अनात्म बोध की बात कही कि आपने बहुत लेट रियलाइज किया. तो हम लोग लकी हैं कि आपसे इंटरेक्शन होता रहता है. तो आपने बीच पे कई बार चर्चाएं हुई हमारी और आपने कहा कि जो भी हो रहा है इस संसार में इज ऑल कंडीशन अराइजिंग जो होती हैं उससे एक्टिविटीज होती हैं और इसमें कोई कर्ता नहीं है. जो शरीर अलग अलग जीवों को मिले हैं उनमें चेतना है, वो चेतना जागृत होती है तो उनको एक्शन के लिए एक्टिवेट कर देती है. तो दैट इज व्हाट आई हैव गिवन टू अंडरस्टैंड कि कोई कर्ता नहीं है, एक चेतना में जागृति आती है जिसकी वजह से अलग अलग जीव जो है अलग अलग व्यवहार करते हैं. तो अगर ये मेरे if it is a felt reality for me, that will be wonderful. No? It is a good that I have understanding it intellectually. वो भी बहुत आवश्यक. Now it has to become a felt reality. मुझे सचमुच में ऐसा लगना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ. सचमुच में ऐसा अनुभव आना चाहिए कि परिस्थितियों के वश कुछ भी हो जाता है. That is the transition from चिंतनमयी पन्या टू भावनामयी पन्या जो हम करने का प्रयास. जी.
तो मतलब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, इसमें कोई आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट नहीं है? ठीक है जी। हाँ, बस इतने कंसर्न। ठीक है, ठीक है, ओके। Anything else anybody would like to comment, or should we have? Do we have enough time? No. So maybe we can have this group में जाने के बाद फिर टाइम नहीं रहेगा discussions का individual. So maybe we can have a collective discussion. We can have treat this also as one room. So please ask questions or I will ask questions. जो आपने इन्फिनिट वाला ऑफर किया ना, दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. अब मुझे ये दिखने लग रहा है कि एक्चुअली ऑल्सो इट सो हैपेंस दैट जो वो इंग्लिश वर्ड है ना टॉगल, देयर इज समटाइम्स ऑल्सो दिस टॉगलिंग एज आई कैन सी बिटवीन relief slash pleasantness and sort of the the desperation, so to say. So थोड़ा सा shift होता है, progress होती है, and then the unpleasantness drops and some more relief comes up, but then that gets overtaken once more by mounting existential unpleasantness, and then that gets overtaken and so forth. So that's the other aspect also, that at least now as you describe it like this, to me it appears like that from my own experience. जी. It's a bit, I'm also learning how to express it. That's the problem. Because it's not linear, the difficulty जब हम सुत्त पढ़ते हैं वो misconception हो जाता है कि वो ऐसे जा रहा है. लीनियर कुछ भगवान की शिक्षा में कुछ भी लीनियर नहीं है. I'm now learning that at least for myself. Yeah. Eightfold path भी लीनियर नहीं है. Nothing is linear. For example, it starts eightfold path, सम्मा-दिट्ठी पुष्ट होगी तो फिर सम्मा वाचा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई. थोड़ी सी जरा सी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो संकल्प ठीक हो गए, फिर वाणी थोड़ी ठीक हुई, और वाणी ठीक हुई तो उससे साधना में महत्व बढ़ा, फिर समाधि पुष्ट होने लगी, तो उसके कारण फिर और क्लैरिटी आएगी. They all go around in a spiral and spiral. They are constantly, there are gradations. It's on a zero to as a continuous. It's never a discrete step कि आज मेरी जो है दृष्टि सम्यक है और कल नहीं थी. It's always grades of gray in between. Always grades of gray. And we keep on developing on the path slowly and slowly. We are used to black and white kind of judgments. वो है नहीं. Yeah, I can see, at least for me personally, it is unlearning that is in fact one of the great lessons of the last 4 months in terms of process. वो बार-बार mind उसी दिशा में चला जाता है. It tries to sort of fit it into categories and take this sequential path. जी. And I think only this evening when you said this issue of infinite, then it sort of clicked. And I can see now that even ये जो propose किया गया है सुत्त में, अब मुझे ये भी लग रहा है कि उसको भी बहुत ज्यादा कस के पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, because it's not necessary that for everybody it will be only exactly in this sequence. Yeah. No. There are steps getting As skipped. I told you, I didn't experience any much present joy or happiness. It was more of a dismissal of, I mean, you could say there was some moments of aha, अरे समझ में आ गया चलो. But then right, and when I say toggle, that's what I mean, because in a few months then that aha then turns to some despair, because you realize अरे यार अभी it's still pretty shallow, like it's happened between yourself and myself in terms of the things that we thought were so substantial. In a few months, in a few years, they seem pretty so there is that sort of back and forth happening, isn't it? But it seems the back and forth is going a little bit like this. I don't know if in the this back and forth is happening because of increasing understanding, hopefully.
Yeah. And moreover, we are working in the territory of Vedanā only. मैं सुबह यही बोल रही थी बंते जी से कि ultimately we are trying to understand Vedanā as a subject. मतलब it's all about Vedanā. So even I felt so कि the way we should see is as a path rather than इसको कुछ हम बढ़ रहे हैं, कुछ एक आयाम आते हैं, ऐसा होता है और फिर उसके बाद में जरूरी नहीं कि वो वैसे ही रहे, because it's a Vedana, it will change. I mean, that's how everything will change. Yeah. Whether you take it as Vedana or whether you take it as Sankhara. As I said the other day, many people take it as emotion, as a Sankhara. Whichever way you take it, it is bound to change. Ultimately bound to get out. सर एक बात मैं अभी फिर से सोच रही थी, तो ये कि लाइक जो हम 3 लक्षण की बात कर रहे हैं, इस बारे में इसको, बिकॉज दिस इज द कोर विच आई अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट वी हैव टू डेवलप. अब उसको डेवलप करने के लिए हमारी सजगता हमेशा तो होती नहीं है, लेकिन कोई ऐसा, हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई शॉर्टकट या स्पेसिफिक तरीका या फिर कुछ ऐसा बताया क्या, कुछ भगवान ने बताया? अवेयरनेस तो हमको बनानी पड़ेगी, और अवेयरनेस के लिए वही है, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अवेयरनेस बनानी है. मतलब ये कोई, इट्स नॉट समथिंग व्हिच, आई मीन दो देयर इज सुत्ता ऑफ सती पठान की सती को प्रतिष्ठित करना है. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देयर इज नथिंग टू बी प्रतिष्ठित करना. इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू रिमेम्बर इट, रिमेम्बर टू सी. वो भगवान हमको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे देखना है. ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी. सती तुम्हारी नेचुरल इंट्रिंसिक क्वालिटी है, वो विलुप्त हो जाती है क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं देते. Mindfulness, as I was seeing on an article, mindfulness is not something that we do. It is there. Only thing is we forget it because there are more interesting things to do in the life, quote unquote interesting. So sir, फिर memory क्या होती है? Memory क्या होती है? Memory क्या is होती है also sir? it's What a is part of how brain? It is a difficult thing in the terms of, but generally most people think it is a part of sanya. It is a part of sanya by which we recognize things, और वो recognition हमारे याददाश्त में रहता है. That flows along with the stream of consciousness. Okay? We are not talking of brain, neuroscience, उसमें नहीं, उस direction में हम नहीं काम करते. I'm not saying that is wrong, but I'm saying according to teaching of the Buddha, this information flows along with the consciousness. So we remember, unless there is a damage to the instrument through which it manifests, like the brain gets damaged, then of course there is lapses of memory and so on. आप जो बता रहे हैं कि माइंडफुलनेस जो है ये एक नेचुरल चीज है, ये है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं इससे. बट ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो प्रैक्टिकली है नहीं. प्रैक्टिकली तो ये है कि माइंडफुलनेस तो देयर आर सम हु आर ब्लेस्ड विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड अदर्स आर नॉट. हर एक में माइंडफुलनेस नहीं होती. आप बच्चा बड़ा हो जाए, समझदार, कोट अनकोट समझदार हो जाए, तो उसको समझ में आता है सड़क के क्रॉस करते टाइम मुझे लेफ्ट भी देखना है, राइट भी देखना है, इधर भी देखना है, उधर भी देखना है. दैट इज माइंडफुलनेस. व्हाट एल्स इज इट? बाहर की तरफ माइंडफुल है, दिक्कत ये है हम अंदर माइंडफुल नहीं. बस इतनी सी बात.
वो कह रहा है कि बाहर की तरफ भी माइंडफुलनेस हट जाती है। हाँ, तो फिर मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। That's what I'm trying to say. But that is the point is that it mindfulness has to be remembered ना, one has to remember कि भैया सड़क क्रॉस करते रहे, इसीलिए बच्चों को माँ बोलती है सड़क क्रॉस करते हैं बाएं भी देख लियो और भारतवर्ष में दाएं भी देख लेना, एक तरफ से नहीं काम चलता। ये तो हुआ जब बच्चा हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम उसके बच्चों से बाद भी भी हम बदतर हो भूल जाते जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता कि सड़क कहाँ है और घर कहाँ है। तो ये अब भी तो क्या होता है करें, ना। तो वो वो तो फिर फिर जो अगर हम ग्रेजुअल, नशे में हैं तो फिर क्या करें, अगर हम नशे में रहेंगे तो क्या होगा? इट्स अ काइंड ऑफ नशे में नहीं, इंटॉक्सिकेशन, नॉर्मल इंसान को भी, इट्स अ नशे काइंड की ऑफ बात नहीं है, नॉर्मल इंसान भी भूल जाता है घर कहाँ है मेरा। वो जो संस्कारों का इंटॉक्सिकेशन होता है उससे भूल जाए, वैसे कैसे भूल जाएगा? Unless he is damaged by brain, yes, then how can he forget? Degradation, it happens. There's a degradation That's of the not, mind. that is a degradation of not that's the instrument degrading, na? Brain is getting degrading, so person is not remembering. That is called a disease. That is And called a another disease. thing is mindfulness is also related with your thought process. You know, if you are continuously thinking, आप आराम मान से लीजिए मैं सोचिए, खाना खा रहा हूँ, I am eating the food, and while eating the morsel of a food, I am somewhere lost. yeah, It doesn't happen when I watch a movie. So there is a नहीं, so difference between the two. you must investigate. वही तो हम कह रहे हैं भैया. That's My what I'm brother, saying. that's So what I'm saying. again, I'm Why? saying, requesting, my submission is that this is also karmic, I believe. ये हर एक के बस का नहीं है कि वो उस लेवल पे पहुंच जाए जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए. What is karmic is the ability to remember, the ability to walk in this direction. That is certainly karmic. That's what I'm But saying. the ability to be mindful is existing in every human being. There's no doubt. You may not use it. That's Yet we are not. That's what I'm saying. That's it. Had it been universally, if I'm not using it, there's no. That's not a. we all would be same. We are not same. That's because we are not using it. That's it. And why we are not using it? Because we are one, that we don't get the right environment where we are told what is mindfulness, how you should behave. Let us keep it. I would suggest that we avoid further discussion on that. We focus immediately on our topic. Okay. Because it's be helpful to keep your mind totally focused on the task at hand, which itself is quite tough. So if I have the permission of Bhante ji, I'll make it tougher by pointing out the last stuff also, last aspect of it. So the time have it. What does it say? The last aspect of it, जो मैंने रोक दिया था. पढ़ूं सर मैं? That is कि भाई सलायतन विभंग सुत्ता खोलोगे, मैं खोलता हूँ. सर मैं पढ़ दूं? सलायतन विभंग सुत्ता है ना बेटा? हाँ. हाँ जी सर, मैं पढ़ दूं? दीप्ति को रोक दिया था. अब ये रुक जाओ, यहाँ पे लिखा है एक प्रकार का संभाव है जो विविध है, विविधता के आधार पर एक संभाव है जो एकीकृत है, I don't want to get into this. सर एक सेकंड सर, इसके थोड़ा सा और ऊपर चले, एक स्लाइड ऊपर. ये वाला जो लास्ट पैराग्राफ है, भिक्षु 6 प्रकार के त्याग आधारित समभाव पर आश्रित होकर 6 प्रकार के त्याग आधारित प्रसन्नता का परित्याग. तो मैं कल पूछ रही थी सर ये वाली बात कि ये समभाव बात कर रहे हैं और हम प्रसन्नता की बात कर रहे हैं. तो प्रसन्नता तो मेरी तब उत्पन्न हो रही है जब मैं इसको 3 लक्षणों को देख रही हूँ और 3 लक्षणों को देख रही हूँ, राइट. और तब मेरे को प्रसन्नता जागती है और मैं ये कह रही हूँ कि इस प्रसन्नता को भी मैं त्याग कर देती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ त्याग आधारित संभाव. तो इसका मतलब ये हुआ क्या, जो 3 लक्षण है उसको भी ड्रॉप करने वाली बात हो रही है क्या? नहीं. इसको ऐसे, हाँ, इसको कैसे पढ़ा? What is being defined is, जैसे हमने अभी यही तो चर्चा की हमने सारी, जो मैंने एक्सपीरियंस बता के कि भाई त्याग आधारित हमारी जैसे जैसे हमारी इनसाइट धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है, दी अप्रसन्नता आस्पेक्ट
produces its fruit in the term of search, and we do greater search. ज़्यादा मेहनत करते हैं हम समझने में, insight develop करने में, और उस insight develop करने का जब लाभ मिलने लगता है तो अप्रसन्नता ड्रॉप हो जाती है और प्रसन्नता आ जाती है। अब वो सर ये वो प्रसन्नता की बात हो रही है क्या सर? Of course, it is the last thing. सर एक सेकेंड सर, जो हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट है वो है एक है त्याग। लास्ट पार्ट। यस यस, एक सेकेंड सर, मैं जो मैंने त्याग आधारित प्रसन्नता को मैं जब डिफाइन कर रही हूँ तो वो है रूप अनित्य है, परिवर्तनशील है, क्षय होता है और समाप्त होता है। जब यथाभूत प्रज्ञापूर्व देखता है सभी पूर्व रूप, सभी वर्तमान रूप अनित्य, असंतोषजनक और परिवर्तनशील प्रकृति के, तो प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो ये मेरी प्रसन्नता है। दिस इज हाउ आई गेट अ प्रसन्नता। रिक्वेस्ट की थी, अभी क्लियर किया था कि ये कोई स्टैटिक प्रसन्नता नहीं है। नहीं सर, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। I agree. I totally agree on those aspects. I am just trying to understand the words मतलब टेक्स्ट को जब मैं समझ रही हूँ तो मेरे को ये समझ में आती है कि ये तीन जो जिस तरह से हमारी को प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है उसको भी मैं इक्वानिमिटी से, दैट मीन्स यहाँ पे कहा जा रहा है उसका परित्याग, so that करो। Actually, strictly nothing has to be done. It automatically happens. Because you realize the limitation of so-called happiness. You realize the peace which comes from equanimity, and you realize the agitation which is associated with happiness. And it just drops off naturally. Okay? Right. जो त्याग आधारित तीन एस्पेक्ट थे ना, प्रसन्नता, अप्रसन्नता और संभाव। तो पहले कहा गया त्याग आधारित प्रसन्नता के आधार पे त्याग आधारित अप्रसन्नता का परित्याग करो। वो एक्चुअली इनसाइट के डेवलप होने से त्याग आधारित अप्रसन्नता का जो पर्पस था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसने हमारी सर्च को आगे बढ़ा दिया और हमने डेप्थ हमारी इंप्रूव हो गई, हमारी प्रसन्नता बढ़ गई, अप्रसन्नता घट गई, वो अपने आप ड्रॉप। अब और डेवलप की हमारी तीनों लक्षण और डेवलप हुए तो इक्वानिमिटी और स्ट्रांग हो गई, और इक्वानिमिटी का टेस्ट प्लेजेंट फीलिंग के टेस्ट से अच्छा है। इट गिव्स यू पीस। प्लेजेंट फीलिंग आल्सो हैज सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन इट एंड इट हैज इट्स conditionalities. So in a way, sorry. So in that manner, the त्याग आधारित प्रसन्नता भी subsume हो जाती है त्याग आधारित इक्वानिमिटी। So in a way are we saying कि जब मैं प्रसन्नता को, क्योंकि जनरली अप्रसन्नता बोले तो दुखद आ गई, तो और ये सुखद हो गई, तो the moment you understand सुखद as a as equanimity से आप देख रहे हैं, I mean, क्या मैं ऐसे भी देख सकती हूँ इसको? There was a quotation I had quoted 1 month back or 2 months. Buddha's advice: look at pleasant feeling as painful. Yes. Look at painful feeling as dart, and investigate the neutral feeling as impermanent. So you can see related to that. Yes. Right. Okay. Thank you. So अब हम कह रहे हैं कि त्याग, अब हम इस प्रोसेस से अगर हम चल रहे हैं, so we come to a state of त्याग आधारित संभाव। Right. अब ये जो त्याग आधारित संभाव है ये विविधता पे आधारित है, मतलब 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ले लेके आधारित है। इससे भी सटल संभाव जो है वो अरूप ध्यान के माध्यम से होगा, क्योंकि उसमें the objects are very fine. तो उसको कहा गया एक त्याग जो विविधता के आधार पे है वो एकता के आधारित संभाव है। So that is even more stronger and even greater peace arises from there. But ultimately what is being said? आगे चलिए इसको छोड़ देते हैं। Let's go. hold on. भिक्षुओं असंबता पर आश्रित हो एकता आधारित एकीकृत संभाव का त्याग, उसका अतिक्रमण। So even equanimity we are asked to drop. That is the direction which is given on the basis of attammayatang. Attammayatang means absence of anything, any construction.
anything, you can say visankhar, sankhar rahit. होता है not, tam मतलब that, maya होता है constructed, not made of that. इस तरह का translation किया जाता है उस sense में. Basically it means nothing which is conditioned, on that we should not depend. Nisaya tammatang means don't depend on anything which is conditioned. Give up all. जो एक teaching थी ना, sabbe dhamma nalang abnivesya से, everything whatever is there in this world should be dropped, should not be relied upon. So ultimately, because even this is, equanimity is also a constructed mental factor. So he says even this should be dropped. And then the freedom from the suffering truly, and then we experience the real release. So that is the last thing to be done according to this sutta. Okay. Sir, asambhaddhata means? Yeah. Now, what is this asambhaddhata? Rather than getting into too much technicality, I would put it simply as not depending on anything which is conditioned, which means only seeking the unconditioned. Unconditioned being the nibbana. Now, what does it mean more practically? I would say give up identification with everything. Including upekha. इस केस में upekha को trump कर रहे हैं ना दर्शन. Upekha is being seen as a condition factor. Yeah? और अगर और इसको सरल करना चाहे तो मुझे लगता है कि जो सती पठान के इस हर सेक्शन के एंड में आती है ना, यावदेव ज्ञान मत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंची लोके उपादीयति. This actually is an alternate way of saying that very thing. कि साधक करते करते ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है जहाँ पे केवल ज्ञान है और केवल सती है. वो किसी चीज पर आश्रित नहीं रहता, संसार में किसी भी चीज का उपादान नहीं करता. That is the culmination of practice. So that is what is being said, that ultimately even this mental factor of equanimity should be seen as a mental factor. And any attachment to that, one can get attached to that, should be dropped. Then we'll move in the direction of viraga, dispassion and freedom from suffering in the true sense of the term. Because then there's no dependence on any conditioned factor, which is called visankhara gatang chittam. चित्त में किसी भी जो अनकंडीशनड है उसकी तरफ चित्त जा रहा है, कंडीशन सब कुछ हमने ड्रॉप कर दिया. तो इसी के लिए उन्होंने कहा इस पर आश्रित हो उसका परित्याग कर देना है, ऐसा कहा गया था, यह इस संदर्भ में कहा गया. So this concludes this section also of the sutta. सर ये सुनने तो आयतन के आधार पर हुआ ये सब कुछ, आधा जितने हमारे संखार थे वो सब कंडीशनड है. लेकिन जो इसके पहले जो दो शब्द दिए हुए हैं आकाश अनंत आयतन और विज्ञान अनंत आयतन, इनको कैसे देखें? नहीं, वो सब वो दे आर ऑल सीन एज experiences which are subtler than the normal jhanic experiences, but they are also all to be dropped. They are all not going to give us freedom from suffering. Nothing is going to give us freedom. आकाश अनंत आयतन क्यों, इसमें ये सब क्यों आते हैं? आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन. I don't know. These are ये तो वो है ना कम्मठ ठान है अरूप ध्यान के. So I don't have much experience of them. आप अनंत आकाश पे ध्यान करेंगे, उसका आपका चित्त बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, बहुत सटल पीस की एक्सपीरियंस होगा, बट दैट डजंट लीड टू फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. जैसे ऐसे देख सकते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स के भी कोई एक यूनिवर्स तो ऐसे बहुत अनंत यूनिवर्स. मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाहता. इट्स बेटर टू अवॉइड ऑल दैट. I mean, there are people who think like that, but I don't want to get it. We want to stick to the teaching of the Buddha.
जो उन्होंने कह दिया मैंने नहीं कहा, हमने भी कह दिया, हम भी नहीं कहेंगे। हाँ, कहीं डिटेल में दिया नहीं है। हाँ, यहाँ कहीं दिया नहीं लोगों ने है। एक्सट्रापोलेट किया हुआ है कईयों ने, यू आर राइट, मेनी पीपल हैव एक्सट्रापोलेटेड इन डिफरेंट वे। नहीं, सुत्तों में कहीं डिटेल में नहीं है। स्मॉल पीपल टू एक्सट्रापोलेट, हम अपनी जो इतना भगवान ने कहा है वो हमारी समझ में ठीक से आया तो विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड। So this is the culmination of this. असंबद्धता, ये क्या मतलब है? संबद्ध होता है ना, किसी से साथ चिपकना, किसी के साथ आइडेंटिटी करना, संबंध बनाना। तो इसका मतलब क्यों कह रहे हैं कि वो संबंध ना बना, मतलब उससे भी आश्रित नहीं होना, किसी भी चीज पे आश्रित नहीं होना, इंक्लूडिंग इक्वानिमिटी। तो एकता आधारित एकीकृत संभाव का त्याग। जी। तो ये भी सब छोड़ देना, मतलब there is no everything is to be dropped. Even equanimity is a mental factor. Basically ये बात कही जा रही है, it is a mental factor which arises and passes away. It is a conditioned realization. However peaceful it may be, it is a conditioned phenomena. So everything conditioned has to be dropped. That's the point. अब उसको define कैसे करें? Because that is also, yeah, because that's also dependent on the conditionality. संभाव भी. It's dependent upon the condition of what? Attachment to sense of self. Oh, there is somebody who is equanimous. Yeah, that way. who's मैं हूँ ना जो हूँ. And there always remains that certain restlessness because of that. जो कि आपने अरंत के केस में जो कहा जाता है ना, वो धच रह जाता है. I mean, obviously that is of a very subtle kind. Maybe there is something beyond. Maybe something beyond. So that kind of a thing is also gone. You've given up all conditioned existence and wait for the unconditioned to manifest. So विविधता के आधार पर संभाव, एकीकृत के आधार पर संभाव, और अल्टीमेटली वो संभाव भी खत्म. Yeah. And that is the final stage. According to this sutta. Yeah. So let's be. This is the way in this sutta the Lord is teaching. Yeah. That is the map. इसमें इस तरह का मैप दिया गया है. सर इसके कल्मिनेशन में व्यक्ति ये श्रोतापत्ति का पाथ बता रहा है या अरहंत? अरहंत. Full liberation. अदिति आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Sorry sir, Aditi has a question. So on the path, the other stages will come naturally. The extent to which हमारी जिस हद तक हमारी इंसाइट डेवलप होगी, उस हद तक हम आगे कहीं ना कहीं पहुंचेंगे. जी. जैसे आपने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया, even that is depend on our karma, right sir? It's not like कि सबके लिए हो. So yeah, somebody will very fast not all the people will go through same experience. Obviously, certainly. Right. And another thing, जैसे आपने बोला, जैसे सत्ता कहती है, पहले प्रसन्न आधारित के बाद में अप्रसन्नता होती है, फिर वो छूट जाती है. जी. राइट. वो जरूरी थोड़ी है अप्रसन्नता हो. इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू नो व्हाट इज द राइट पाथ एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ योर स्पिरिचुअल डिस्ट्रिक्ट. Yeah, if one is satisfied with one's spiritual progress, then no need to be going to aprasannata this thing, right? This is not a, in my opinion, this is not that it is exactly for everybody. It has to follow the same steps. Okay. If somebody is really, so depend on each and individual, right? Yeah. Right. Yeah. Okay. But sir, dukh is the fuel to walk on the path of walk on the path. Dukh is sir, dukh is the fuel. नहीं है ना सर. Dukh It's is not. Yeah. जरूरी नहीं है. वो क्वीन केमा इतने खुश होके खड़ी होके अरहंत हो गई भगवान के सामने.
Yes, some people are already gone through their share of suffering in past lives. But Past life wish क्यों करे ऐसी? नहीं wish करने की बात नहीं है. It's not a question of wish. हैरान हो जाए. Yeah, it's not a question of wishing that I should get suffering. It's a hard reality of life. Even Buddha, even the Bodhisattva had suffering. So what to talk of others? Even he suffered when he learned, when he saw the four scenes, and that's what gave him the fillip to work. Right. It's not that he just stood and got the liberated. So हमारे सामने इतने महान पुरुष का एक उदाहरण है, तो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? But very simple things like he used to have a lot of pain on his back and in his body, even at the last stage of his life. The general dissatisfaction with the existential situations is, in majority of the cases, the driving force for search. You can see that whether it was Sariputta, Mahamoggallana, anybody, everybody. They, we see about them, they're frustrated with their opulence and wealth, and then मैं मेले में गए, यार क्या देख रहे हैं मेला, बताओ नाच के नर्तक क्यों देखे जा रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं क्या बकवास देख रहे हैं, हम कहते चलो उठो यहाँ से, कहीं तो जाओ, चलो संजय के पास चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर. That's the way. Such great, I mean, उनसे ज्यादा पार में किसकी होगी? Yet they had to go through. Yet the Buddha had to go through 6 years of torment, 6 years of harsh practices. This is not to say that we should inflict suffering on us, but that if it happens, it should be seen as a blessing. Sir, does it leads to transformation? जैसे मेरे टीचर कहा करते थे, जैसे कि दूध है, दूध छाछ बन गई, फिर उससे मक्खन निकला, फिर मक्खन से फिर घी हुआ, पर वो मतलब वो बदलती नहीं है. It doesn't change. Total transformation. क्या नहीं बदला? जैसे कि दूध को घी, to give an example. हाँ, तो उससे क्या कंक्लूजन क्या निकाला? एग्जाम्पल तो समझ आ गया. जैसे कि मतलब ये स्टेज खत्म हुई तो ही विल नॉट गो बैक. जैसे कि जैसे अमात प्रमाद में है, सो वो छूट गया, फिर नेक्स्ट स्टेज ऐसे. Unless we have entered the stream of liberation, Buddha's teaching full of hundreds and probably thousands of discourses. Unless we have entered the stream of liberation, you can just fall down any moment. The Buddha says again and again. तभी तो सोतापन्न बनने को इतना महत्व देते हैं कि भाई उसका justification क्या दिया था? This will ensure that you will not go into lower realms of existence. And there are suttas transformation is that means you should become a sotapanna, then that is called transformation. Yeah, that is the point. So that unless you fall in the stream of liberation, there is a grave risk of entering into one of those lower realms where we can have enormous suffering for long periods of time. Okay, so we should not be complacent. That's why we are trying our best to understand the whole issue of liberation from various perspectives: perspective of sanya, perspective of 5 khandas, perspective of 4 noble truths. कोई ना कोई तो क्लिक कर जाएगा हमारे को. Good. Thank you very much. So tomorrow we'll have no discussion on this.